हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इन डिटेल और पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकलते हैं और अगर पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। Polynomial is an algebraic expression made up of variables and constant। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे कि मैं एक टर्म लिखता हूं, आप देखिए आपको समझ में लगेगा पॉलिनोमियल क्या होते हैं। √2x, ओके, 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 एंड सो ऑन। ये सब एक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, √2x, इसमें x की पावर 1 है। ये एक मोनोमियल है, पॉलिनोमियल है लेकिन मोनोमियल है। ये एक 3x प्लस 5, इसमें भी x की पावर 1 है। ये एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल है। इस थर्ड पॉलिनोमियल देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ये एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तीन टर्म्स हैं इसलिए इसमें ट्राइनोमियल है ये। और नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टर्म्स कनेक्टेड यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए इसमें कोई टर्म नहीं आई, मतलब कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, इसमें माइनस का और प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं ये टर्म्स। द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दिस इज द मोस्ट important thing, non-negative integers. What is the meaning of non-negative integer? If we look at the polynomials here, we will see here power of x is 1, here also power of x is 1, here power of x square x is 2. There will not be any negative power. नेगेटिव पावर नहीं होगी, जैसे कि x की पावर -1 नहीं होगा, नेगेटिव पावर नहीं होगी। कोई भी नंबर रूट में नहीं होगा, जैसे कि x को हम रूट में लिखेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, तो पावर रूट में नहीं होगी। डेसिमल x की पावर -3.7, डेसिमल में पावर नहीं होगी, फ्रैक्शन में पावर नहीं होगी। x की पावर 3/2 पावर फ्रैक्शन में है। इधर देखिए पावर नेगेटिव है, पावर फ्रैक्शन में रूट में है, डेसिमल में है, पावर फ्रैक्शन में है। एक और देखते हैं 1/x, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इधर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, अगेन पावर विल बिकम -1, सो दीज आर only non-negative, means these if the power is in negative, roots, decimal, fraction and 1/x, it will not be considered as a polynomial. Only 0 and positive powers are considered to be as polynomials. Now what is the degree of the polynomial? The degree of the highest exponent of the variable, it determines the type of polynomial. If let us see what is the meaning of degree 0. Here I'll write 3. 3 is a polynomial or not? 3 is a polynomial because here 3 is attached with 3x की power 0, and we know that x की power 0 is equal to 1, therefore it is 3. So x की power 0 is attached here, therefore x की power 0 is equal to 1, 3 into 1 is equal to 3. So this is degree 0 is a constant polynomial. 3 is a constant polynomial. Linear polynomial means if the degree is 1, like 3x plus 2, here degree of x is 1,
here degree of x is 1, therefore this is a linear polynomial. Here 2x square plus 4x plus 6. Here degree of x is 2, therefore this is a quadratic polynomial. Again 3x cube plus 4x square plus 9. Here degree is 3, therefore this is cubic polynomial. This is quadratic polynomial. This is linear polynomial. When degree is 0, it is constant polynomial. Now how to determine the zeros of the polynomial? First of all we must know what is the meaning of zeros of a polynomial. हम किसी भी polynomial को, कोई भी polynomial लेते हैं, उसको factorize कर लेते हैं. For example हमने polynomial लिया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे. इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. अभी हम पेयर बनाएंगे. लेट मी क्लियर वन थिंग, हाउ आई हैव मेड दीज फैक्टर्स आई विल एक्सप्लेन. आई विल टेक टू टर्म्स, आई विल टेक टू डिजिट्स, total of which should come minus 7 and product should come minus 18. Product will be minus 18, 6 into minus 3, and sum should be minus 7. Okay, so I'll factorize 18, prime factors of 18, 2, 9, 3, 3. I have got four factors. 2, 3, 3, 1. Now I will arrange them in such a order that I will get 3 into 3 9 and 2 into 1 2. So I have taken 6x square minus 9x plus 2x minus 3. Now in these two I will find what is the common number between these two. 3x. 3x is common between these two. What will I will get inside? This is 2x. 6x square divided by 3x, x1 2. I got 2x minus 9x divided by 3x, x cancel, 3 minus 3. Now in these two terms there is no common term. I will take plus 1 as a common. Now 2x divided by 1, we will get 2x, minus 3 divided by 1, we will get minus 3. So again out of these two, 2x minus 3, 2x minus 3, it is common in both the terms. I will take 2x minus 3 common. Again from this if I take 3x, 2x minus 3 divided by 2x minus 3. From the first term 2x minus 3 I have taken common, so I have written first term first, after that divided by the term which we have taken common. 2x minus 3, 2x minus 3 will cancel out, we are left with 3x. Now second term plus 1. Now plus 1, 2x plus 3 divided by 2x plus 3. 2x plus 3, 2x 3 plus 1, we are left with plus 1. Now the factors are, these two are the factors of 6x square minus 7x minus 3. Again I repeat, 2x minus 3, 3x plus 1 are the factors. Now we will set these factors to 0. 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 1 is equal to 0. If we solve it, 3 has a minus sign here, it will go to that side, it will become positive. X 2 is multiplying with x, there it will go, it will become 3 by 2. And 1 is positive sign, it will go to that side, it will become minus 1. 3 is multiplying with x, it will go to that side, it will divide. Now these two are the zeros of this polynomial 6x square minus 7x minus 3.
Number of polynomials are 2 because it has the degree 2. Here we see it has the degree 2, therefore it will have 2 zeros. And zeros, why it is called zeros? If we place in place of 2x minus 3 0, this entire polynomial will become 0. If we place in place of 2x 3x plus 1 0, this entire polynomial value will become 0. I'll show you how it will come. Six x square minus 7x minus 3 is equal to 2x minus 3, 3x plus 1. If I put 0 here, if we multiply 0 with 3x plus 1 and put in here also, this entire polynomial value will become 0. Same, if we put 3x plus 1 0 and multiply it with 2x minus 3, it will become 0, and if this with the value of this polynomial will become 0. Therefore these are called the zeros of the polynomial. Now let us go to exercise number 2.1. Question number 1. In this question we have to find out the number of zeros. Only we have to calculate the number of zeros. Number of zeros क्या होते हैं? Just to see. Number of zeros वो होते हैं जहां पर x axis को ग्राफ टच करता है. If we see in the first figure, here this is the x axis and this is the y axis. Here graph is not touching your x axis, it is touching y axis. So therefore first part, no zeros, because it is not touching your x axis, it is touching only y axis, it is touching only y axis, therefore it has no zeros. Now let us come to the part number 2. Here we see carefully, see the x axis, only at this place it is touching the x axis, it is only touching at one place, so number of zeros 1 हो गया. Part number 3, here 1 place, 2 place, 3 place, number of zeros is 3. Fourth part, 1 2. Fifth part, 1 2 3 4. Sixth part, 1 2 3. This is for the answer where polynomial is y is equal to px. If the polynomial is y is equal to px, means polynomial is in the form of x. Polynomial is in the form of x. There in that case हम x एक्सिस को जो ग्राफ टच करेगा उसको देखेंगे. हेयर हम y एक्सिस को जो ग्राफ टच कर रहा है उसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमारा ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है. इधर x एक्सिस को नहीं टच कर रहा, इसलिए हमने इसमें जीरोस नहीं लिया, इसमें कोई जीरो नहीं है. अभी हम इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं इसी क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमारा पॉलिनोमियल था y इज इक्वल टू पी एक्स. अगर हमारा पॉलिनोमियल होता है x इज इक्वल टू पी वाई, सेम क्वेश्चन के लिए हमारा पॉलिनोमियल y की फॉर्म में, लाइक वाई स्क्वायर, वाई प्लस 3, वाई क्यूब माइनस 3. if it is in form, it is in this form, in that case here it is touching y axis at one point, so number of zeros will be, answer will be changed. In the last slide you will see number of zeros for the first figure will be are 0. Now here number of zeros is 1 0. Here no zeros. Here it is touching y axis at one point, number of zeros is 1. Here number of zeros is no zeros because it is not touching your y axis at all. Here also y axis it is touching at one point, number of zeros is 1. Here also it is touching your y axis at one point, so number of zeros will be 1. So, I think it is clear to all of you. Now let us proceed to exercise number 1.2.